US President Donald Trump is looking increasingly rattled by the Tianjin Tango, the rare show of unity between Xi Jinping, Narendra Modi and Vladimir Putin at the SCO. As the three leaders talked stability, trust and rejecting bullying behavior in the world order, Trump back home went on a tariff rant once again, justifying his sudden 50% duties on Indian goods. He accused India of one-sided trade ties, of charging the highest tariffs in the world, and of selling massive amounts into the US while blocking American businesses, and of still buying most of its oil and weapons from Russia. Now this after Xi Jinping, flanked by Putin and Modi, hit out at global bullying, urged the world to reject Cold War mentality, and also declared that despite turbulence, the SCO has shown success. Now, for Donald Trump, the coming together of Russia, India and China is a multi-win challenge. RIC can trade among themselves, blunting US tariffs, joint ventures cut dependence on US supply chains, and most importantly, Trump's tariff weapon loses bite as India, Russia, China build alternate trade and energy routes. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। Позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a Cold War and sometimes a hot war with China for decades. Putin gives India a discount on crude. They refine it, sell at premium prices to Europe, Asia, and Africa. It's nothing but profiteering. India cannot stand on the thin reed that somehow they need this oil to run their cars or cool their homes. It's false, just simply false. Here's the problem with India. It's a two-pronged problem. There's 50% tariffs on India. 25% of them is the reciprocal tariff because of unfair trade. 25% is the fact that India is buying oil from Russia. So start with the
reciprocal trade tariffs. The problem is that India literally is the Maharaja of tariffs. It has the highest tariffs of any major country in the world, and it's in denial about that. It tries to tell everybody out there that that's not true when it is demonstrably true. So they should engage with us. They haven't done that, as Japan, Korea, the Philippines, Indonesia, the European Union has. They simply think they continue having their way with us. President Trump's not going to allow that. And now let us understand why the Tianjin Tango rattles United States and also Donald Trump. Now, the first point is that trade will be redirected. So Russia, India and China can trade among themselves, redirecting trade and also blunting the US tariffs. And tariff dilution is also one factor, as the Russia-India-China ties undercut the Trump's tariff strategy, and it also provides alternate trade and energy routes. So basically, the impact of the tariff imposition will become minimal. Tech and minerals, if we talk about tech and minerals, the joint ventures reduce the reliance on US-led supply chains. So this Russia, India, China also reduce their reliance on the US-led supply chains, which is also not a good news for US. And the sanction shield is also there. So if one of the RIC, Russia, India, China, is hit, the others will compensate, which will eventually weaken the US coercion.